Hey everybody, welcome to another stream, day number 16. Today I'll be sharing special technique for doing product renders inside Maya using V-Ray. Um, but before we start, I just wanna tell you that this is my workflow, and I use this for any of my commercial project. If I do like any sort of freelance or any sort of project which requires end-to-end my effort or my team's effort, we go with this workflow. Okay, so what exactly I'm gonna show you guys is wait, let me just open my project file. Also, if you have not joined the Discord server, please join. It help us grow together as a community. Uh, just a second, I'll just open the project file and I'll quickly break down what exactly I'm doing. All right, so let me open the project file. It's more like a breakdown than doing it step by step. I believe you all are familiar with the steps which I usually do in modeling and texturing. So yeah, okay. So before we start, I'll quickly model this asset and then I'll start with this. It's better to do everything instead of just showing the lighting and rendering. But just in case you're wondering how to do model like this, I'll show you. बहुत सारी चीज़ें हैं इसको करने के लिए, बट वही है, अपन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. No worries. थोड़ा I am late today, but I believe it's fine. Um, Let me save this. Before we start, I'll just quickly, get all the textures and other stuff so that, it'll become easy for us to go with the further step, right? Just give me a second. Okay, I'm not supposed to use this. Neither this one. Where can I get textures, man? टेक्सचर्स मिल गया तो आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा. टेक्सचर्स ढूंढना पड़ेगा थोड़ा. ठीक है, ढूंढेंगे, कोई दिक्कत नहीं. um पैकेजिंग वाला मिलता नहीं इजीली, बट वही है, ढूंढने पे तो भगवान मिल जाते हैं यार. यू नो इससे अगर मैं निकाल पाऊँ तो इट वुड बी ग्रेट, आई गेस. आई कांट गो इन हियर क्या? I'll just save this.
वेब में आ रहा है ये। ये डिटेल नहीं आ रहा है, डिटेल चाहिए टेक्सचर एक्चुअली। तभी मैं मॉडलिंग वाला प्रोसेस भी चालू कर सकता हूँ, राइट? आई आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द बेस्ट टेक्सचर्स आउट देयर, देन विल गो स्टेप बाय स्टेप। जस्ट गिव मी few minutes. This looks good, but then वही है प्रॉपर। चलो ये क्यों ऐसा किया है? मेरे पास है, टेक्सचर है, बट आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ गुड वन। लुक सो गुड, राइट? यार बट वही है, इसका टेक्सचर मिलेगा नहीं ऐसे ना, इसको ढूंढना पड़ेगा। रुको, देखता हूँ मैं, एक सेकंड। टेक्सचर आए तब तो। जीरो अल्ट्रा आया तो, बट कैन वी यूज दिस? आई थिंक वी कैन। देखता हूँ, वेब पे आ रहा है यार। अच्छा ठीक है, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इसी में। जुगाड़ कर सकते हैं, नो बिग डील। इवन दिस इज फाइन, नहीं, दिस इजंट फाइन। इज देयर एनी वेबसाइट और समथिंग क्या? Hmm, फिर मेरे को सब्सटेंस पेंटर में मॉडल करके जाना है, एंड देन वी कैन डू दिस। गिव मी अ सेकंड, द वन आई वाज हैविंग, आई विल गो इन दैट। जो मेरे पास था उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो रियलिस्टिक टेक्सचर नहीं है, तो मुझे रियलिस्टिक बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप थंबनेल के लिए मैंने वो बनाया है, लेकिन आई वुड मेक इट इम्प्रोवाइज्ड इन ऑर्डर टू शो, राइट? जो भी यार स्ट्रीम देख रहा, लाइक करके जाना यार। um I'm damn tired यार। नॉट श्योर, ये वाला टेक्सचर कंपैरेटिवली। नहीं नहीं, ये अपने को पूरा पूरी चाहिए होगा पैकेजिंग के साथ। मिल भी नहीं रहा है यार। चलो ठीक है, मैं अभी बस ब्रेक डाउन कर देता हूँ। आई विल नॉट बी शोइंग ऑल द स्टेप। देखता हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं मिला टेक्सचर वाला, नॉर्मली मिल जाता है, नहीं तो फोटोशॉप में बनाना पड़ता है, ऐसे इलीगल है यूज़ करना किसी भी कंपनी का, ब्रांडिंग वाला चीज़। तो मैं देख रहा हूँ, अगर कुछ जुगाड़ मिल गया तो वेल एंड गुड है, वरना देखते हैं।
ऐसे मुझे मॉन्स्टर बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अभी अगर मिल जाए तो मैं पी लूंगा आराम से। ये तो फोटोशॉप में से बनाया है। देख रहा हूँ क्या किया जाए। मॉन्स्टर। हम्म। Hey, this looks good. From where you get this? But this is very low in quality. Can you send me the website ka link? This is JPEG actually. Lakshay, if possible, try sharing the. यही वाला था वो, I guess the one which you shared, right? Hmm. Okay. Yep. I think. Thanks, yeah, thanks. I'll just take. अरे यार. ओके, कल वाला स्ट्रीम कितने लोगों को अच्छा लगा? कल जो मैंने किया था वो कितने लोगों को अच्छा लगा था? सिर्फ दो ही लोग स्ट्रीम को देख रहे हैं, बट ठीक है। आई होप वाला स्ट्रीम कल का यूजफुल रहा होगा लोगों के लिए। सो ओके. यार ये ना बहुत नाटक है यार इसका, पिंटरेस्ट का भी। अब बोल रहा है लॉगिन करके ही मानेंगे। हेलो लक्ष्य, हेलो. लेट मी चेक यार व्हाट इज देयर, सो वी कैन स्टार्ट देन। आई गेस यहाँ पे पैकेजिंग वाला है तो, बट मुझे पसंद नहीं आ रहा है कुछ भी ऐसा। इसका हाई रेस वर्जन नहीं है इधर ना, कैसे ही निकाला जाए? आई गेस वी हैव टू डू सम जुगाड़ में भी, बट वही है, पूरा पूरी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। गम रोड पे जाने के लिए बोल रहा है? अरे भाई, अच्छा ये लोग अलग से बनाने वाले आर्टिस्ट लोग होते हैं। फ्री का है कुछ यहाँ पे? बाप रे, इतना तो महंगा कैन नहीं है. नहीं नहीं, दिस इज नॉट इवन लीगल टू यूज इट, दिस गाय हैव मेंशन्ड इट लाइक सो, जबकि खुद का भी उसका नहीं है, कंपनी का है. देखो यार, लोग ब्रांडिंग के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं. द वन विच यू शेयर, राइट? कहाँ गया वो? आई गेट इट व्हाट यू ट्राइंग टू से. इमेज अप स्केलर यूज करने बोल रहा हूँ ना. ठीक है, देखता हूँ एक बार ट्राई करके. स्टार्ट ऑल.
देखते हैं काम करता है क्या। लेट्स सी, लेट्स सी। ये वर्क करेगा बट पता नहीं। तो है लो क्वालिटी में, अगर ऑनेस्टली बताऊं तो। दिख नहीं रहा, रियलिस्टिक टेक्सचरिंग के लिए नॉट वेरी सूटेबल हियर, बट देखता हूँ। लेट्स सी, कैन वी अपस्केल दिस टू अ वेरी हाई रेजोल्यूशन। हाँ, 400 पर करो सर। हाँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। यार ये एआई वीआई में यूज करता नहीं हूँ वैसे तो, बट ठीक है, करेंगे। अभी देखता हूँ मैं कैसे होगा ये। यार कुछ लिखा हुआ पता नहीं चल रहा है वैसे, बट इट्स फाइन आई गेस। जो चीज़ मुझे चाहिए वो यहाँ पे दिख तो रहा है। अब जो चीज़ नहीं दिख रही है उसको मुझे मिक्स करना पड़ेगा विद द फाइल्स आई हैव। इससे तो बहुत अच्छा है। हम्म, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स do this. So I'll go and I'll just use the existing model which I am having, but उसको टेक्सचर में वापस से करूँगा बिकॉज कैन का मॉडलिंग करना इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। और अगर उस पार्ट में मैं गया तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एंड द स्ट्रीम विद इन एन आवर और सो। मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है, तो आज मैं मॉडलिंग कुछ नहीं करने वाला हूँ। आई जस्ट बी डूइंग द फन पार्ट। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू लक्ष्य फॉर शेयरिंग द वो जो भी था वो, उसके लिए थैंक यू। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, ये मॉडल मेरे पास ऑलरेडी से है। आई विल जस्ट बी मूविंग द, ये सब जो भी है ना इसका यूवी वगैरह फिट इन करके, विल सी व्हाट वी कैन डू इन हियर। ठीक है, सो आई विल अप्लाई अ वीरियम मटेरियल हियर। ठीक है, एंड देन आई विल गो टू हाइपर सेड। ठीक है, minimize this for time being, and then I'll go in here and graph the network. Now let's just import the image which we have created right now, the wrap basically. All right, so this was the texture, right? I'll just be plugging this inside the diffuse channel. Now this probably is going to look weird in the beginning, I would say, but उसका solution है मेरे पास, इसको fix करेंगे। UV and इसका UV, no, no, wait, wait, wait. Why is it acting weird? One second. What's happening? All right. So what I'll do is I'll just move this particular part. अरे यार, layout UV and unfold. Okay. And then I'm gonna move this. I'll go to transform and then I'll be moving this. Cool है। I'll straight the UVs because ये पूरा पूरी straight अभी नहीं है। Hmm.
इसको तो चीट ही करना पड़ेगा आई गेस। हम्म। हम्म। Okay, I think we have a basic shape right now, so for the remaining part I think यहाँ वाला पार्ट तो ये मैच नहीं हो पा रहा है, बट देखते हैं एक बार कुछ जुगाड़ अगर हो पाए तो। ये जुगाड़ तो नहीं हो सकता है गेस। यहाँ पे काफी ऐसे स्पेस है यार, वो बेकार लगेगा ऐसे। बट यहाँ पे सीम वो मुझे सही नहीं लग रहा है, ये सीमलेस नहीं है टेक्सचर, प्रॉब्लम इज दैट। और वो चीज़ वियर्डली फेसबुक और ये सब आ रहा है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी ये जो दूसरा वाला पार्ट है यहाँ पे एक दूसरा मटेरियल लगा देते हैं जस्ट फॉर टाइम बिंग। और नहीं तो मेरे पास एक और जुगाड़ है विच इज़ इवन बेटर, बट ठीक है, अभी फॉर टाइम बिंग लेट्स नॉट गो देयर। I'll just open the hyperset, and for this second UV material, UV material, what I'll do is I'll import the texture which I already was having. So ये वाला कुछ ऐसा दिखता है, very less detailed but this will do the job. अभी diffuse channel लग गया ना, अभी देखते हैं ये कैसा लग रहा है। I think it's fine, but because this thing is there, right, the UV seams, it's going to be a problem though. चलो ठीक है, अभी इसका जुगाड़ किया जाएगा जो भी है। समझ में आ रहा है ना?
Okay, my bad. Apologize for being a bit late. Okay, so I don't think so this will matter so much, but because of the fact that this is rescaled from AI, um, this is coming like this. एक बार ना मैं ट्राई करता हूँ कि ये नहीं हो ऐसा, ठीक है? अभी हो रहा है क्या? अभी भी हो ही रहा है, वो नहीं जाएगा सीम उसका। एआई पे है ना, वही एआई का वही प्रॉब्लम है। वही है, नहीं जाएगा वो। ये वाला रहेगा वैसे ही, ठीक है? ओके, तो व्हाट आई डू इज, वेट लेट मी चेक, अगर कुछ और भी मिलता है तो आई बी यूजिंग दैट। हम्म, वो डिटेल्स नहीं आ रहे हैं यार इसमें। आई नीड दोज डिटेल्ड टेक्सचर्स, विदाउट दैट। देखो यहाँ पे इट इज द सेम थिंग बट दिस इज अ फोटोग्राफ, राइट? यहाँ पे वही फर्क है। आई जस्ट कॉपी दिस इमेज। मजा आएगा भाई, आज लेट होगा लेकिन आज मजा आएगा, आज का स्ट्रीम मजेदार होगा भाई, कसम से। एकदम हाइपर रियलिस्टिक टेक्सचरिंग होगा आज। मैं सारा एकदम लेके फिर उसको करता हूँ। बेसिकली सारा सेटअप होके ही रखा है, जस्ट हैव टू यू नो। ये ना टेक्सचर सही है लेकिन इसको एआई वाला इतना बुरा तरीके से वो कर दिया है ना कि मैं क्या ही बताऊं यार। दिस रियली नाइस इमेज। लेट मी सी इफ आई गेट, कोई भी पैकेजिंग वाला नहीं है क्या, कसम से? um, भाई फ्री पिक तो अलग ही नशे में है, कसम से भाई। ये कौन सा नशा है? uh, what the fuck?
आदित्य सॉरी सर लेट हो गए अरे नो प्रॉब्लम आदित्य आई एम जस्ट लुकिंग आउट फॉर टेक्सचर्स फॉर द कमर्शियल प्रोजेक्ट थिंग अगर आप लोग भी कर रहे हो तो एक अच्छा लर्निंग हो सकता है ना ये वाला मुझे लग रहा है कि सही है बट ये वेब में नहीं आ जाए बस हाँ ये आई थिंक ये चल सकता है हमारे काम के लिए हाई क्वालिटी भी है एंड देन लग भी अच्छा रहा है चलो देखते हैं इसी को करेंगे हटाओ उसको अभी ऑलराइट सो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन बस वही है मैं कैन को मॉडल नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मॉडलिंग तो यार आप लोग को ऑलरेडी से आती ही है करेक्ट मैंने इतने सारे स्ट्रीम में मॉडलिंग बताया है तो आई डोंट थिंक सो इट्स नीडेड राइट नाउ ऑलराइट सो रितेश कदम हेलो हेलो रितेश this looks fairly decent and without seams I believe so there is a seam but we can fix that easily UV editor and then yep now there is no seam ठीक है but then there is a problem वो हम लोग फिक्स कर सकते हैं आराम से कोई दिक्कत नहीं है hmm all right so you can see some problem in here तो उस चीज़ को फिक्स तो आराम से कर सकते हैं ठीक है अभी ये वाला आई थिंक लुक्स फेयरली डिसेंट राइट देयर इज नो सीम एज वेल सीम वाला पार्ट इधर है बट वो सीम है भी नहीं इट्स फाइन आई गेस कूल है अभी वी विल नाउ स्टार्ट डूइंग द बेसिक शेडिंग ऑफ दिस वन यूजिंग जस्ट वन मैप कोई और मैप की जरूरत नहीं है हमें बस एक मैप से हम लोग इसका पूरा पूरी वो बनाएंगे अपन मेटालिक और रफनेस इसी से बना देंगे ठीक है so what I'll do is I'll just expand the hyper shade I'll make a duplicate version of this and wait instead of duplicating yep now I'll press tab and take color correct Ritesh what's your job profile where do you work and how much experience yes dude I cannot reveal where I work but I can just tell you that I am working in the industry for almost over 7 years almost close to 7 years it's been so yeah this is going to be our roughness map what I'll do is now we will connect this out alpha to reflection glossiness and we will take this and do like this cool we'll again make a duplicate and take a color correct node
Then we'll plug this again to color channel, but this time around we will decrease the saturation and नहीं इसको वन ही रखते हैं. गामा इसका clamp अल्फा रुको इसके वैल्यू से ही थोड़ा देखना पड़ेगा. आउट अल्फा एंड मेटलनेस में लगाते हैं इसको. Now to control the metalness, alright, so we have something here, but दिख नहीं रहा है, right? ठीक है कोई बात नहीं, अपन इसको देखने के लिए एक बेसिक सा ऐसे ही लगा देते हैं HDRI अभी फिलहाल के लिए. हाँ ठीक है, एक HDRI लगा के अभी हम लोग चेक करेंगे इसका शेडिंग. लोग टेप करते हैं अभी इसको मस्त. 3070 का कार्ड है तो इट शुड बी फाइन आई गेस. And we will just add a denoiser in render elements, and now we'll see. अभी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है राइट, सब कुछ दिख रहा है एकदम. ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही हो रहा है इसके साथ, बट ठीक है. हाइपर शेड में हम लोग जाएंगे और इसको यूज रफनेस कर देंगे. ठीक है. एंड देन इनसाइड दिस वेट. ओके ओके आई गॉट इट. बिकॉज कलर करेक्शन नोड है तो आई थिंक आई हैव टू गो वाया दैट रूट. दिस इज द metalness one, this is the color node, and this is I think this was the roughness, right? Yep, yep. All right, so मैंने इसको GGX पे रखें. And now roughness. Wait, what I'll do is I'll just break the connection. Break the connection. Hmm. Let me make the black and white map of this directly in Photoshop because there's some reason it's acting weird as fuck.
All right, so if we go in here and see, I mean, this thing is fine. This is not a problem. But if I press Control J, U, with the saturation. All right, so we have our roughness map and we have our metallic map. Now we'll just test it out. Hmm. So I'll just import the roughness map here and then take the out alpha and then directly drag and drop to out alpha in here. All right, so now we will take the, where is it? Metalness. I think this is in JPEG, but it's fine, I believe. For time being, we are just testing it out, right? So, um, yeah, okay. This looks very stylized right now. I think जो metallic वाला channel है ना, उसको मुझे देखना पड़ेगा एक मिनट. यहाँ पे जो पार्ट white है, वो metallic है और जो पार्ट black है, वो metallic नहीं है, right? तो if I have जो white है यहाँ पे वो metallic है, right? तो I think in that aspect I think reverse I should reverse the channel maps here. So let me take the out alpha of this and channel it to out alpha maybe. यहाँ पे देखो अभी थोड़ा थोड़ा दिखना चालू हुआ, राइट? Hmm. All right. So that looks fairly decent. But the only problem I'm having here is that
I think I have to make this whole thing white, this whole gray part, just for metallic channel. I think now it's fine. This can be used as metallic. I'm just doing some manual jugaad, okay? I think that's um I'll explain in a bit. Let me just quickly graph the network and I'll just import the metalness which I have made. Okay, metallic. Now if I take the out alpha of this and connect it here, this should work fine, I believe so. Uh, okay, and then I'll take this and Control Shift I, Control I. G. All right, so now I'll just roughness V2 and then I'll just drag and drop in here. Okay, I think we have our channel map, but then it's very, I would say, you know, random. ये पूरा अच्छे से हुआ नहीं, but you get the point, right? जो मेटलनेस मैप है, एक काम करता हूँ, मेटलनेस को ना मैं पूरा देखता हूँ. If you have the right map, then it should be fine. But if you don't have it, then यही होता है भाई, बकवास. Hmm. Okay, so I'll just go to Photoshop and then I think इतने देर में तो Substance Painter में हो जाता है यार. Substance Painter में इसको करता हूँ मैं. Photoshop बहुत दिमाग खा रहा है, बहुत ज़्यादा. I'll just export and I'll do this in Substance Painter. No. Okay. Just a second. Oh my god, I have streamed for an hour and मैंने अभी तक कुछ नहीं किया भाई, क्या ही बोलूँ मैं. कोई नहीं, स्ट्रीम चॉप ऑफ कर दूंगा मैं. uh, hmm. All right, so अगर मैं चाहूँ तो बिना उसके भी कर सकता हूँ, but no, I wanted this to
look good, and for that reason I'll be taking this model to Substance Painter now, because Substance Painter में बताना भी easy पड़ेगा मुझे, I believe so. All right, so all right, so we have to now stop the IPR, and then I'll just, you know, अरे माया क्रैश कर गया क्या? Probably. Hmm. Ah, damn you, Maya. I knew it. कोई नहीं, कोई नहीं. All right, so अभी we'll take the model. All right. यार माया क्रैश कर गया बिना सेव हुए, बताओ अभी वापस से वो पूरा स्टेप करना पड़ेगा क्या? ठीक है, कोई नहीं. ओके, ये हमारे पास था ऑलरेडी से. ठीक है, अभी मुझे इसमें से इसका जो यूवी है उसको स्ट्रेटन करना है, and then I'll just, no wait, layout UV, and then I'll go to unfold and layout this, and then I will just move this to the second UDIM, and I'll tell you why I'm doing this जब Substance Painter में इसको लेके जाऊंगा तब. Okay, cool. So I believe इसमें लूप नहीं है प्रॉपरली, तो यहाँ पे एक लूप डाल दूंगा और एक लूप यहाँ पे डाल दूंगा. अभी it's fine I guess. Okay, file, export selection, and let me export this. By the way, we just hit 251 subscribers on Twitch. Yeah, let's go. Okay, so let me take a new project file and let us make it 4K. Okay. Don't mind the
thing over here because we are just texturing this anyways. Yeah, so I'll just import the textures right now जो मैंने इंटरनेट से लिया था, but we'll just be modifying that a lot. Huh. As a base color, wait 1 second. I'll drag and drop here, and then wait, we'll import this as a texture for current season. Okay. Yeah, now I'll add a fill layer here. ठीक है. And alt click in here, drag and drop. Okay, so okay, wait 1 second. I did a mistake. Let me smooth this out before exporting. Okay, cool. We'll take the file, export selection, can monster. Hmm. We'll make this 4K and use UV tile flow. All right. Now I'll add a fill layer. Alt click on color and then I'll drag and drop this. Now I will be I'll add a black mask here and I'll select this UV tile to only affect this area. Now if you see, this texture is flipped. So yeah, we'll make the textures properly in here. So no worries. Over there. Ultra Strawberry Dreams. Cool. Yep. Okay, so we have our base color ready now. What I'll do is I'll click on roughness now, and again I'll drag and drop the same roughness in here. Then I'll add levels. I'll take it to roughness, and I'll go to roughness channel now. अभी roughness में, before we do anything, but we should add a metal, and metallic में भी इसको ऐड कर देते हैं. तो अब हमें बेटर क्लैरिटी मिलेगा कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, राइट? So this looks really bad right now, so we'll fix that. We'll fix that definitely. We'll go to roughness, and if we now switch it over to roughness, जो भी एरिया ब्लैक है वो रफनेस में है, और जो वाइट में है, you can see that is not in roughness. I mean, that is basically opposite of what we wanted. All right, so
I mean, looks fair enough, but now if you go to metallic, this should again will add a filter, add a level, and then we'll go to metallic. It's not roughness everywhere, right? So ठीक है, I mean, अभी सबस्टेंस पेंटर में एक अच्छी बात यह है कि वी कैन इवन पेंट, अगर हमें कहीं पे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये वाला पार्ट तो फुल मेटालिक होगा, तो वी कैन इवेंचुअली पेंट इट ओवर. I'll just do one thing. So painting, what if I just, चलो ठीक है, ये मोर और लेस हो ही गया, बस थोड़ा सा अब जो हमारा दूसरा वाला था लेयर, उसको हम लोग करेंगे. And then once we have our textures, we will then be starting with the interesting part. It's 1 o'clock already, right? But it won't take much time. Rest of the part is easy. I'll just import the remaining textures right here.
अभी सही लग रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ओके, कैप वाले लेयर में अभी हम लोग रफनेस मेटालिक में इसको डाल देंगे। और नॉर्मल मैप मैंने इंपोर्ट नहीं किया था। ओके। अभी बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, और वो ये है कि ये जो कैप है ये बहुत गंदा ऐसे लग रहा है। तो what I'll do is I'll just add a black mask। ठीक है, अभी बेटर लग रहा है काफ़ी। इसका रफनेस मैच कर दूं क्या, कि ऐसे ही रखूं? ऐसे बेटर लग रहा है क्या? नहीं। Alright, so we have our textures ready, and now we will talk the real stuff. मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पेंट लेयर करना ही पड़ेगा। Roughness metallic, cool. We have everything ready now. Just a second, मुझे रफनेस में थोड़ा, नहीं मेटालिक जो है ना, इसका मेटालिक थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। Hmm. Now it's fine. I guess now it's fair enough. I just have to do one thing. You can see कि ये थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो रहा है, राइट? तो दिस इज लुकिंग वियर्ड टू बी ऑनेस्ट। बहुत ज़्यादा गंदा सा दिख रहा है ये वाला पार्ट। अच्छा ठीक है, इसका उपाय ये है कि ये वाला जो आइटम आ रहा है इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो चले जाएगा। एंड दिस पार्ट,
ऐसे ही ठीक था यार, वो मेटालिक नहीं, पूरा गड़बड़ हो गया ये। ओके, नाउ इट्स फाइन आई गेस, इट्स फाइन। एक और चीज करना पड़ेगा, उसका नीचे वाला जो लेयर था ना, इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ so that nothing will weirdly act weird। ठीक है, we have our texture ready। Now we'll export this file, export textures, and just export the texture in the destinated folder, and then we will start doing the texturing of this. Okay, so I'll apply a new material in here, and now if I just start, you know, importing the textures which I've exported from Substance already. So wait a second, I'll just import the textures. I need can base color. Wait, I just need one, right? And then I need metallic. I need normals, and I need roughness. Alright, so we have all the textures with us now, and these textures are like done in Substance, so it's much easier to connect, right? एक बार ये रेडी हो गया हमारा लुक डिव, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपना मेन सिनेमैटिक्स के ऊपर। प्रोडक्ट रेंडरिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर आएंगे हम लोग, ठीक है। ओके, सो कूल। नाउ मेक श्योर कि एवरीथिंग इज इन यूडिम फॉर्मेट। ओके, सो यहाँ पे एक यूडिम मोड करके रहता है, यूडिम टाइलिंग मोड, उसको यूडिम मारी में कर दो, एंड बेस कलर को एज इट इज रहने दो। तो जैसे ही इसका दो लेयर मिलेगा ना, वेट वन सेकंड, माया अगेन हैव क्रैश्ड आई बिलीव सो। वाओ, today Maya is acting superbly weird as always। Okay, Maya is not acting weird, I think my brain have stopped working। Okay, so let's just first select the UV tiling mode to UDIM Mari for everything, UDIM Mari, UDIM Mari, and then we will start connecting the channel, like base color is for diffuse, then out alpha from roughness, and then reflection glossiness पे इसको connect करेंगे, and we'll increase the reflection color in here। Let me first save this। यार ये बार बार। Alright, so now I'll press 6 here,
and so that you can see the preview. Let me generate the preview in here. So now you can see overall what's going on, right? I'll take the out alpha of metalness and then connect it, wait, connect it to the metalness channel, right? Now use roughness, and then we have to generate the preview in order to see. Same here as well, generate preview. ये इधर अभी अच्छे से दिखाएगा नहीं, वो डायरेक्टली आपको रेंडर में दिखेगा। अभी इन दोनों को अपन कलर स्पेस रॉक कर देंगे बिकॉज दिस इज लाइक PBR material, so definitely you have to do that. And then out color to bump map, and then make sure you are in normal space tangent, normal space, normal map in tangent space वाले पे आप हो, उस पे आप चेक बॉक्स कर दो, then yeah, it's all well and good है। अभी सारा मैप कनेक्ट कर दिया हूँ मैं। अभी हम लोग इसका एक HDRI लगा के देखेंगे and then we'll start doing our stuff. Alright, so I've imported an HDRI. Wait, I have to select the V-Ray, then change it to GPU, make the setting roughly, and then now if we go to IPR mode, this is what we are going to get. Because we have did our work directly in Substance Painter, we don't have to worry about the reflections and the glossiness. So we have more or less basically did the texture of the scan. Now I'll show you how exactly you can make this look like a commercial render. Okay, तो उसके लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है थोड़ी सी। अभी हम लोग एक काम करेंगे, इसको अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ, एट्रीब्यूट रहेगा इसका, ऑलराइट रहेगा। Okay, so let me take this to the lighting file which I already have made, and then I'll just break down the whole thing. Cool है? Okay, can monster can geo. Alright, so I'll just open the main asset which I have made for the thumbnail. So I'll just open that, and then I'll import this model, and then I'll show you what exactly I have did and what not. Let me first clean up the whole file in there. अभी मैं यहाँ पे ये वाला जो ओल्ड एसेट था, इससे उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा पहले, ठीक है? एंड देन okay, so basically what I have did now, I have just collectively put it all the objects just like so, and then I have created a camera, ठीक है? ये कैमरा है यहाँ पे, you can see. And wait, let me just show you what exactly I've did in order to get what exactly I have in here.
But before I do that, let me first replace all this with the model and texture we have made right now. So I'll just go to file, import, and then I'll take the monster model. Now go to modify, um, match transformation, match और transform. तो अभी वो exactly same place पे लाके देगा, है ना? Now what we have to do is we have to do the same for every single thing. अगर pivot same है तो वो same काम करेगा, ठीक है? Keep that in mind. So let us do that. Wait one second. No. Hmm. मैं बस अभी सबका ट्रांसफॉर्मेशन मैच कर रहा हूँ and then I'll show you what exactly, because this project is already done, there's no point of you know uh, doing it again. I'll just show you what exactly I have did in order to get the desired result which I have in the render thumbnail basically. Okay. Alright, so I think ठीक है अभी बस दो बचा है, right? Okay. Alright, so we have our monster group new. Alright, we have our new asset ready, and the older can I'll just hide it. And now I'll show you what exactly I have did, like the whole step basically. Right, let me just save this. Commercial monster. Alright, so what I do now, whenever I have to do such kind of stuff where I have to show like high end renders, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ create पे cameras and camera, ठीक है? Then I go to camera, go to panel and then select the camera, ठीक है? अभी मैं manually एक ऐसे alignment करूँगा, ठीक है? Before doing anything, and then I'll just switch on the camera view, मतलब ये camera grid, क्या बोलते हैं इसको यार, डिस्प्ले के अंदर रहता है एनवायरनमेंट डिस्प्ले ऑप्शंस, हाँ इसको फिल्म गेट बोलते हैं, ठीक है? एंड देन आई विल जस्ट यू नो डू दिस, एंड मेजर थिंग हियर इज द फोकल लेंथ बेसिकली, बिकॉज कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए आई थिंक ज़्यादातर 125 ऐसा स्टेप का फोकल लेंथ यूज करते हैं, है ना?
and it's just a matter of time after you do that. अभी देखो हमारा बेसिक लेवल पे कैमरा भी रेडी हो चुका है, सेम मैंने यही किया था फॉर कैमरा वन। ठीक है, इट्स इवन मोर जूम्ड इन, यहाँ पे थोड़ा समझ रहे हो ना, इसी टाइप का है सेम। अभी मैं देखो आईपीआर करूंगा ना, क्यों आईपीआर करता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि मैंने लाइटिंग में इसके बाद क्या किया था। ठीक है, अभी लाइटिंग का ब्रेक डाउन करता हूँ मैं एक एक करके, रुको। लुक्स सो गुड यार, लुक्स अमेजिंग। यही सारी डिटेल्स ना पुराने वाले रेंडर में नहीं थी, दैट्स व्हाई आई हैव डिड ऑल दिस। I've gone through all these, these many steps. But this looks clean, to be honest. थोड़ा इसका ह्यू सैचुरेशन ऑफ कर देता हूँ। Alright, so now I'll just take you through the lighting of this one. ठीक है, step by step I'll take. So कैमरा एक बार फिक्स हो गया तो आपको अब कुछ नहीं करना है। कैमरा एक बार फिक्स हो जाता है ना, बस अपन को उसके बाद इट इज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम की, मतलब उधर क्या कितना आना चाहिए, है ना। लाइटिंग का वो अपन आर्ट डायरेक्शन अभी करेंगे। मैं बताता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली किया क्या है। ठीक है, so once your camera is ready, right, to roll out, take the camera, select the camera, and then make it a physical camera. Now once you do that, right, you will see like it's totally like nothing is visible. So I'll come to that. Abhi, once you have the physical camera, go to the attribute editor and then check on the specify focus box, and then change the exposure color correction to exposure value, and then make this like, you know 8 or something, 8, just do fine। ठीक है, all right, so now let us just let me switch on the water droplets and I'll show you how exactly I've did the water droplets as well. I have to probably open another file, but this is what is there. See, once the water droplets are there, how cool it is looking, right? This looks good, yeah, looks damn good. Okay, so अभी इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं है तो अपन कैमरा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, we'll go in here and we'll switch on enable depth of field। abhi right click, set focus point, and then we'll just ठंडा ठंडा मॉन्स्टर ड्रिंक इज रेडी, राइट। बट यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड अभी बहुत ज़्यादा है तो उसको थोड़ा कम कर देंगे, 8 के आसपास रखता हूँ एफ नंबर को, और इसको कर दूंगा मैं 7, मे बी 7 पॉइंट समथिंग, 7.5 or something, should do fine, yeah। Now I'll just show you how exactly I've did the um, these water droplets. Okay, so there's a plugin for that, and that's a free plugin. Once you install that, then it's all well and good.
see all these details, right? I'll show you these all details were not there in the prior render which I have did. Let me just show you. Yep, this was the older render which I have did. You see the difference, right? I mean the quality difference. The reason I have gone to Substance is because of this. Because I was not very happy with the reflections and other stuff. आधे से ज्यादा चीजें ब्लेंड हो जा रही थी, मतलब ना मेटलनेस सही से आ रहा था ना कुछ भी, ये बहुत ज्यादा ऐसा गंदा दिख रहा है. दिस इज व्हाट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? अभी देखो जैसे इसका रेड जो है ना, ये वाला रेड वाला, आई थिंक पैकेजिंग में ही वैसा ही कलर है, मैं क्या ही करूंगा. बट यू सी राइट, आई मीन डे एंड नाइट दिस इज same lighting, it is the same lighting, but you see, because of the proper roughness and metalness, we are getting this realistic result. And of course droplets make it even more better. That was all it, guys. Okay, I'll just show you how exactly you can use this droplet tool, which is free. I'll just share this in the Discord server. If you're not on Discord, you can chat directly join from there. But before that, let us just quickly break down the lighting of this. Okay, lighting is nothing special. It is very simple. There's two dome light, one rectangle light, and two directional light. Okay, we'll go one by one with everything. And remember that lighting is a very important role. It's a very important vital role when it comes to art direction. अब आर्ट डायरेक्शन का यार देखो ऐसा है कि इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी लेवल. ठीक है, आप कितना सोच सकते हो उसके ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है. But look at this. The realism of this is like on point here. It's so good. And it is all because of the fact that we have gone to Substance Painter and then manually we have painted like whatever was needed. तो सर saturation, देखो ये रियलिस्टिक चीज जो होती है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है. देखो कितना प्यारा लग रहा है. I mean, I too loved it. I seriously loved it. No one will say that this is like not realistic. मैं तो नहीं मानता भाई. मेरे को अगर कोई दिखाएगा तो मैं खुद भी बोलूंगा कि भाई बहुत रियलिस्टिक है ना? अभी चलो अपन एक्सप्लेन करते हैं इसको मैंने कैसे क्या किया है, इसमें लाइटिंग मैंने कैसे करी है. ठीक है, वन बाय वन विल गो. आई जस्ट सो फर्स्ट लेट अस go through the rectangle light. ठीक है, which is the main direction which I have given here. ठीक है, यहाँ पे अगर if you see right, there's this one straight blue light जो आ रहा है, जो एक मतलब I just wanna show कि ये देखो यहाँ पे फोकस जाना चाहिए. आर्ट डायरेक्शन क्या है, आप ऑडियंस की नजर को लेके जाते हो, है ना? वो आर्ट डायरेक्शन वही तो है, मतलब छोटी छोटी बारीकियां आपको देखनी होती है. तो ये पहला बारीकी मैंने ऐड किया था कि मैंने एक ऐसा एक रेक्टेंगल लाइट बनाया, which is right here. If you see, scaled it a bit and then placed it just right here. ये थोड़ा और पीछे ही प्लेस हो सकता है, but this is CG. Come on, we are dealing in CG, right? Everything is in here is CG. तो ये हमारा पहला रेक्टेंगल लाइट है, ठीक है. And if I switch off this and go to directional light, okay, wait, let me go back. Okay, तो ये हमारा पहला लाइट था जो रेक्टेंगल लाइट था, इसमें से इतना ही लाइटिंग आ रही है, ठीक है. वेरी माइन्यूट, बट वही है, छोटी छोटी चीजों को हम लोग ऐड करके एक बड़ा कंपाइलेशन बनाते हैं. लाइटिंग तो वही है पूरा गेम.
इसका मैंने मल्टीप्लायर जो भी है इसका इंटेंसिटी वो बहुत कम रखा है, जस्ट वेरी माइन्यूट टू हैव दोज सॉफ्ट रिफ्लेक्शंस, you know. Now I'll just take you to the second light, which is a directional light. This is more like leaning your eyes towards the main hero subject. तो यहाँ पे मैंने एक ये लाइट यूज किया है डायरेक्शनल का, और एक ये यूज किया है। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट पे हैं, बट यू कैन सी राइट कितना वो निखर के आ रहा है वही चीज। अब जो बाकी के दो लाइट है ना, इट्स मोर लाइक, हाउ शुड आई से, एनवायरमेंट लाइट है वो। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हो, बट याद रखना कि ये मेजर पार्ट है। ये कर लिए सही से तो बाकी सारा काम आसान है। ठीक है, अभी देखो मैंने जो जो लाइट्स यूज किया था वो तीनों को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ये तीनों लाइट हमने मेजरली आर्ट डायरेक्शन के लिए यूज किया है। अब जो जो मैंने दो एनवायरमेंट लाइट यूज किया है ना, एक उसमें से अपना मैंने यहाँ पे सॉफ्ट रिफ्लेक्शन लाने के लिए एक मैंने ऐसा बोल सकते हो कि सॉफ्ट बॉक्स यूज किया है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी माइन्यूट, बट यू कैन सी राइट उसका भी इंटेंसिटी काफी कम रखा है मैंने। इसका इफ आई हैव टू गो इन हियर, इट्स लाइक 0.2 इसका इंटेंसिटी। सो जो सबसे लास्ट में मैंने जिसका जो इंटेंसिटी के मामले में सबसे ज्यादा एग्रेसिवली वर्क कर रहा है वो है अपना सेकेंड एनवायरनमेंट। अभी ये क्या है, इट्स लाइक अ बेसिकली फिल है, ये पूरा फिल लाइट है ना, और ये पूरा ही फिल कर दे रहा है पूरे सिनेरियो को। यहाँ पे एक लाइटिंग इधर एक लाइट इधर, बट पूरा जो लाइटिंग अपन को चाहिए वो इधर से ही आ रहा है। अभी एवरीथिंग कंबाइंड टुगेदर is what making this shot. Now coming straight to the water droplets point, water droplets, how I exactly did it. So I have used a tool here, which is a free plugin for Maya. I'll just show you the website. If you go, wait once again, कहाँ गया? GitHub, या इसको मैं ना चैट में डाल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मेरे डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा, ठीक है, बाद में। तो इसको यूज कैसे करते हैं वो अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, बेसिकली इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है। गिटहब पे जाओ, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करो जिप फाइल को, अनजिप करो, और फिर अब मैं दिखाता हूँ कि करते कैसे हैं उसको। ठीक है, तो लेट्स से अभी मुझे इसी किसी पार्ट पे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नहीं है, तो अभी मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल कैसे करना है, बहुत सिंपल है। गो टू विंडोज, जनरल एडिटर, एंड देयर इज अ स्क्रिप्ट एडिटर, राइट। स्क्रिप्ट एडिटर पे जाओ, एक नया पाइथन वाला टैब बनाओ। ठीक है, और जो भी जिप रहता है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना सीधा। ठीक है, राइट क्लिक से ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड देन इसको जब इसको सेलेक्ट करो सबको, एंड देन सेल्फ में लेके आने के लिए कुछ नहीं करना, मिडिल माउस से यहाँ पे लाना है, दैट्स इट। अभी बिफोर क्लोजिंग माया, मेक श्योर यू सेव ऑल सेल्फ्स। ठीक है, अभी जैसे इस पे क्लिक करेंगे, वी हैव दिस टूल राइट नाउ, राइट। तो let us focus on creating those droplets. What I did ना, I first select this, and then इसको यहाँ से select करेंगे, and then we subdivide the mesh. तो अभी क्या होता है ना, एक proxy mesh बनता है इसका। ठीक है, you can see right, this tool automatically just generate a proxy mesh which is higher in subdivision. Okay, अभी मुझे जिस हिसाब से भी ड्रॉपलेट चाहिए और जितना भी चाहिए मैं उसको उतना रख दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे एकदम छोटा ड्रॉपलेट चाहिए, राइट, मेक इट रेन बेबी, एंड देयर यू गो। अभी वहां पे वो ऑटोमेटिकली ड्रॉपलेट बनाएगा, एंड जो हायर सब डिवीजन वाला प्रॉक्सी मैच था उसको वो डिलीट भी कर देगा। देखना अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट अभी देखो जैसे मैं इसको अनहाइड करता हूँ ना, यहाँ पे देखो आ गया ना वाटर ड्रॉपलेट्स, सिंपल एज दैट। और अगर कहीं पे मान लो ऐसा आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है,
कुछ नहीं, डिलीट कर देने का। बट मोर और लेस ना, ये बहुत अच्छा वाटर ड्रॉपलेट्स दे देता है आपको, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्यारा लगता है देखने में। तो जो भी कैमरे के सामने में दिख रहा था मैंने उसके ऊपर ऐड कर दिया। बाकी जो नहीं दिख रहा था वहां पे मैंने ऐड नहीं करा है, सिंपल एज दैट। अभी इन सब के ऊपर एक ही शेडर मैंने चढ़ाया है, जो कि वाटर शेडर मैंने खुद से बनाया था, उसको मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अ लॉट, बट दैट्स व्हाट्स अप। आई गेस या दैट वाज ऑल इट गाइस, मतलब वही है। अभी जैसे इसका मैं आईपीआर निकालूंगा तो यू विल सी लाइक कितना वो रियलिज्म ऐड करता है, देखो। मतलब इवन दो इट्स आउट ऑफ फोकस, but you can see, right? I mean, the amount of detail which this thing adds is just insane. बहुत अच्छा लगता है वो देखने में। तो बस वही है, मतलब छोटा सा ही प्रोजेक्ट था, बट आई थिंक एक्सप्लेन करना वाज अ बिट, कैसे बोलूँ मैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। बट वही है, अभी जैसे ये वाला अगर आप रेंडर देखो और ये वाला रेंडर देखो, आसमान जमीन का फर्क दिखेगा। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट, ओनली प्रोफेशनल कैन चेक दिस पॉइंट्स कि क्या प्रॉब्लम है इस रेंडर में और इस रेंडर में। जब मैं इसको कर रहा था ना, तो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी, एंड फॉर दैट रीजन आई वेंट टू सबस्टेंस एंड देन आई डिड ऑल ऑफ दिस थिंग। जो भी है इसका, मैं सबस्टेंस पेंटर और जो भी प्रोजेक्ट फाइल है इसको किंगडम ऑफ फैन बेसिस, वेलकम ब्रो, वेलकम। um I think we are closing the stream anyways abhi, but whatever I have explained is, I think, is fair enough for people who are very new to Maya. Can you make 3D model of gummy bar friends? Gummy bar friends? I don't know about that. Let me check. Uh, what is this gummy bar thing? Gummy bar. Are you talking about this one? These are very simple, buddy. Whatever I have like made is like 10x more complex than this one, I guess. But yeah, I mean, I can try doing it if I get time. So, but yeah, thanks for tuning in, buddy. Okay. Um, I'll try doing that. Thank you so much for tuning in. Sure, sure. I'll just check. These are very fairly simple characters, very easy to make. I mean, these are basically boxes with sub-D mesh on it. Cool. I guess we will be wrapping this stream now, and I will see you guys in the next one. Thank you. Thank you, everyone. Good night. Bye.